MCQz नंबर 151 है अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज बीइंग असेस्ड। एक ऐसा प्रोसेस जो इस चीज़ को देखता है कि क्या चीज़ असेस्ड की जा रही है, उसको इवेल्युएशन कहते हैं। नेक्स्ट MCQज है 152 फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डैश लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग डैश 153 an assessment used to identify difficulties in the learning process is called diagnostic assessment. 154 to compile the information into pattern and propose a plan is called synthesizing. The most complex skill of Bloom's taxonomy, the most complex कौन सी स्किल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो वो ओरिजिनेटिंग है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर, कौन सी हैं जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की थ्री स्टेजेस कह लें या डोमेन्स कह लें, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। 157 द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एकेडमी was founded by, एकेडमी किसने फाउंड की थी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में फर्स्ट लर्निंग प्लेस थी हायर एजुकेशन के लिए, तो वो प्लेटो ने बनाई थी। 158 द अपोलॉजी द प्लेटोस रिकलेक्शन ऑफ द स्पीच गिवन बाय सोक्रेट्स व्हेन सोक्रेट्स वाज चार्ज्ड विद नॉट बिलीविंग इन गॉड्स which from the following is not an informal assessment। कौन सी इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है, तो प्रोजेक्ट्स जो है इनफॉर्मल नहीं है बल्कि ये फॉर्मल असेसमेंट का पार्ट होते हैं। अ स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड थिंक्स रैशनली, ये MCQs रिपीटेड है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। थ्रू विच एक्शन चिल्ड्रन लर्न फास्ट, कौन से एक्शन से जो है चिल्ड्रन जल्दी लर्न करते हैं, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से जल्दी लर्न करते हैं। 162 projective techniques of measuring personality is superior to the other techniques प्रॉब्लम सेंटर। कौन सी प्रॉब्लम सेंटर है, डिस्कवरी भी प्रॉब्लम सेंटर है, ह्यूरिस्टिक भी, प्रोजेक्ट भी, ये सारी क्या है प्रॉब्लम सेंटर स्ट्रेटजीज हैं। 154 the teacher should read other books also except course books, what will be the benefit of it। इसका क्या फायदा होगा कि टीचर कोर्स बुक के अलावा भी दूसरी बुक्स को स्टडी करे। इससे ये होगा कि नॉलेज विल बी ओवरऑल डेवलप एंड दे टीच वेल। 165 there are three main duties of a teacher which are teaching, regulation and direction। teaching, regulation and direction are the three duties of teacher। 166 which of the following factors the classroom management के ये सारे फैक्टर्स हैं, डिसिप्लिन, कंट्रोल, बिहेवियर इन क्लासरूम, बिहेवियर ऑफ टीचर विद स्टूडेंट्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, ये सारी जो हैं क्लासरूम के फैक्टर्स हैं मैनेजमेंट के लिए। 167 the students of class 5 make too much of noise in maths class, the probable reason of this could be that the teacher is not well versed in teaching methodology। 168 true or false items can provide accurate criterion of evaluation because chance of guessing on the part of the examiner is a high probability। They generally inflate actual scores due to guessing or cheating। option C they do not require through the study to attempt। all these options are correct about false and true and false options criteria। Who is called the father of the both realism and the scientific method? Aristotle is called the father of realism and scientific method both। Realism is a philosophical approach that argues that ultimate reality is the world of physical objects। The philosopher who is called the father of idealism is, idealism का father किसको कहा जाता है, प्लेटो को। The psychologist who for the first time proposed the concept of connectionism in learning was Edward Thorndike।
The philosopher who for the first time taught logic as a formal discipline was Aristotle. Logic जो है सबसे पहले अरिस्टोटल ने पढ़ाई थी as a formal discipline. 174. Idealism is a philosophical approach that argues that dash are the only true reality and the only things worth knowing. Ideas. According to Edward Thorndike, learning is about responding to the stimuli. Stimuli को respond करना जो है वो learning है. The connection between stimulus and response is called stimulus और response के दरमियान जो relation है उसको क्या कहते हैं? Stimulus response bond. 177. The dash, the stimulus response bond, S और bond जिसे कहते हैं the better a person has learned the lesson. जितना SR bond या stimulus response bond strong होगा उतना जो है समझ लें कि उतना ज़्यादा जो है बेहतर लेसन समझ आया. Anything that causes a reaction is called, कोई भी चीज़ जो रिएक्शन काज करती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं. Which of the following techniques is used in educational survey? टेस्ट भी, इंटरव्यूज़ भी और क्वेश्चनियर्स भी, ये तीनों चीज़ें जो है हम जो है कंडक्ट करते हैं सर्वेज के लिए. ऑल ऑफ द अबव. 180. विच ऑफ द स्किल्स डू यू कंसिडर मोस्ट इसेंशियल फॉर अ टीचर? कौन सी स्किल आप समझते हैं कि टीचर के लिए इसेंशियल है? टू कम्युनिकेट वेल. वेल कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. 181. कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग इज, माइक्रो टीचिंग के लिए जो कंडीशन नेसेसरी है वो क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट, respected manifestation of only one skill, observation and criticism. All these are necessary for micro teaching. 182. In teaching learning process, which of the following things is done first? कौन सी चीज़ पहले की जाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? तो टास्क एनालिसिस जो है वो पहले किया जाता है. 183. Which of the following conditions must be fulfilled for proper adjustment in the environment? Physical fitness and health, social acceptability of the person, free from psychological diseases. All these are necessary factors. The most complex skill in cognitive domain of Bloom's taxonomy, Bloom's taxonomy में जो main cognitive domain of Bloom's taxonomy में जो complex skill है वो है characterizing. Characterizing is the most complex skill in cognitive domain of Bloom's taxonomy. 185. Teaching by small steps and frequent short assignment techniques are useful for learning disabled, slow learners, educationally backward children. For all these children, teaching by small steps and frequent short assignment will be useful. 186. All round development means development of all aspects of personality is called all round development. Option A. 187. For healthy arrangement of a classroom, necessary thing is ventilated classroom, sufficient light should be in the class, appropriate seating arrangement in the class. All these are necessary or sufficient or necessary things. A scoring guide used to evaluate the quality of student is called, जो स्कोरिंग गाइड है जो स्टूडेंट की क्वालिटी को एवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको रूब्रिक्स कहते हैं. उनको क्या कहते हैं? रूब्रिक्स. 189. The technique of a classroom management where the teacher punishes negative behavior by removing an unruly student from the rest of the class is called time out technique. जब बच्चे को किसी नेगेटिव बिहेवियर की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं टाइम आउट टेक्निक. 190. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फियर कॉजिंग स्टिमुलाई? कौन सा फियर है जो स्टिमुलाई काज करता है? फियर ऑफ फेलियर इन द एग्जामिनेशन ये भी है. फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस लाइक मीटिंग विद पीपल इन हाई ऑफिसेस, बीइंग लोनली इन द हाउस, ये भी फियर की एक टाइप है. फियर ऑफ विल्ड एनिमल्स. ऑल ऑफ द अबव. All of the above is the correct answer. Next MCQs have 191. According to Robert Sternberg, the three different types of required intelligence for creativity are synthetic, analytical, and practical. These are the three. 192. Plato argued that dash are fit to rule. Only philosophers are fit to rule, according to Plato.
The three laws of connectionism are the laws of effect, exercise, and readiness. Are three laws of connectionism. The study of the physical, social, and mental aspects of aging is called. तो फिजिकल, सोशल और मेंटल एस्पेक्ट जो है एजिंग के, उनको क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी. इनकी स्टडी जो है जिस ब्रांच में की जाती है उसको जीरोंटोलॉजी कहते हैं. 195. Which of the following is an important anger arousing situation during adolescence? Biased attitude against them, not getting the needs fulfilled, unfair and insulting attitude towards them. So all of these. Option D. One of the basic principles of socializing individuals is education. 197. You wish to become a teacher because you like to be a teacher. 198. The teacher wants students to practice by repetition of some learning content. He normally uses dash method, drill method. He uses drill method if he wants to practice. When the teacher is restating the information to show basic principle in the classroom, he is actually generalizing. MCQz number 200. Providing temporary support and encouragement to students until help in no longer needed is called scaffolding. इसको scaffolding कहते हैं. Option A is the correct option.